Hello, learners. Today we are going to start with a new chapter, and this particular chapter is again from your course book Beehive. All right, this is going to be the first chapter which you are going to read, and the name of the chapter is The Fun They Had. All right, and chalo, let's start the story. But before we read, let us look into the introduction which the writer has given, okay, for us to read before. Okay, so before we read. The story we shall read is set in future, when books and schools, as we know them, will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some idea. So देखो, very simply, if I need to wrap this up, I would only like to say that just suppose the time of the pandemic, okay? लास्ट 2 साल हम कैसे घर में बैठे हुए थे और पढ़ रहे थे अपने फ़ोन से स्टक होके, और किस तरह से हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, या अभी भी जब आप लोग ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हो। सो इसमें आपको टीचर्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मीन्स ज़रूरत है क्योंकि मैं वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ फिर मैं डाल रहा हूँ, ओके। But eventually you can sit at your respective homes and you can get an idea about what this particular chapter is all about. So basically, when we are going to read about this particular chapter, it basically tells us about what? It tells us about future schooling, okay? The future schooling or the way of education which people will have, suppose, say, 100 years from now. So basically, what will be the scenario over here? Let's see. Learning through computers. In a way, we are doing that right now as well. Virtual classroom. In the time of pandemic, we have already seen that. Robotic teacher. देखो, अभी मैं इंसान की तरह बड़बड़ा रहा हूँ, पर हो सकता है कुछ साल बाद या कुछ आफ्टर 50 years और आफ्टर 10 decades, 100 years, you can see robotic teachers. इंसान और नहीं पढ़ाएंगे. Moving e text. Like अगर जैसे मैं अभी तुम लोग स्क्रीन पे देख रहे हो आप सभी कोई, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ टेक्स्ट मूव भी कर सकते हैं जैसे हम लोग पीपीटीज वगैरह में देखते हैं, ठीक है। So moving ahead, in pairs discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. तो ये आपका एक क्लास एक्टिविटी है. It depends on your school teacher whether they do it or not. We are not going to do it for sure over here. All right, now moving ahead. Have you ever read words on television or computer screen? Obviously, the answer for this will be yes from your particular part. Can you imagine a time when all books will be on computers and there will be no books printed on paper? जैसे आप यही समझ लो, मैं ही जो आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने एनसीईआरटी की ये किताब डाउनलोड की है और तब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे पास फिजिकल बुक इस समय प्रेजेंट नहीं है. So this is actually going to be the scenario what the writer is saying at this particular juncture of time. Okay, would you like such would you like such books better? क्या तुम्हें ये सारी बुक्स पसंद है? Again, this is a matter of discussion which your teacher is supposed to do in the class, which I am not supposed to do. Now, moving ahead, let's begin with the chapter. Margie even wrote about it that night in her diary. So out here we are talking about a character in this particular story whose name is Margie, and from the very first line it is pretty much clear that Margie is a type of girl who loves writing diary. Alright, now on the page headed 17th May 2157, अभी का डेट क्या है 2022. हम लोग जो स्टोरी का बात कर रहे हैं वो कब का बात कर रहे हैं 2157, अप्रोक्सीमेटली 140 odd years or 115 odd year 140 odd years after today's date. All right, and she wrote, today Tommy found a real book. So, out here in this diary, Margie is talking about whom? Margie is talking about Tommy. Perhaps Tommy is Margie's friend. Okay, and she is writing about Tommy. And what is she writing? That 17th May 2157 is the day when Tommy found a real book. मतलब actual physical book जो आपके घर में आपके पास है. तो इसी चीज से हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वक्त उस समय कितना ज्यादा बदल जाएगा, ऐसे राइटर को लगता है.
ओके। उनको लगता है कि वक्त बहुत ज़्यादा बदल जाएगा, और जिसके कारण होगा क्या, कि बच्चे सब कुछ, उनके पास जो मटेरियल्स रहेंगे, वट एवर अमाउंट ऑफ मटीरियल्स दे विल बी हैविंग, ऑल दोज मटीरियल्स विल बी in their computers and their tablets and on their phones. There won't be a single piece of physical books through which they are going to read. All right. Now, it was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. That means अब मार्गी ये रिमेम्बर कर रही है, मार्गी अब ये सोच रही है कि मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे, ठीक है, मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने बताया था कि बहुत समय पहले क्या होता था, जितने भी स्टोरीज जो थे, जितने भी स्टोरीज थे, वो सारे कहाँ प्रिंट रहते थे, पेपर में प्रिंट किए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल द बुक्स विच वी आर हैविंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। दे टर्न्ड द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। क्रिंकली का मतलब यहाँ देखो दिया हुआ है, क्रिंकली का मतलब होता है विथ मेनी फोल्ड्स और लाइन। जब हम लोग बुक्स यूज करने लगते क्या होता है, पेजेस में टर्न्स आ जाते हैं, फोल्ड्स आ जाते हैं, उसी तरह से, ठीक है। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on the screen. So यहाँ पे मार्गी क्या बोल रही है कि मार्गी को ये चीज बहुत फनी लगा सुन के, कि ये जो बुक्स थे, जो फिजिकल बुक्स थे, उसमें जो वर्ड्स थे वो एक ही जगह रहते। जैसे अभी हम जो पढ़ रहे हैं सपोज, ठीक है, बुक एक ही जगह है, आप अगर बुक खोल के देखोगे आपके वर्ड्स कहाँ एक ही जगह पे प्लेस्ड है ना। तो अब हम लोग क्या एनालाइज कर सकते हैं एज अ रीडर, दैट मार्गी उस तरह का बुक पढ़ती थी जहाँ पे बुक्स जो थे, उसके जो लेटर्स थे वो मूव करते थे स्क्रीन में और वो पढ़ती थी। लेकिन बात अभी के समय का हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि बुक्स रहते हैं कि वर्ड्स जो है, द वर्ड्स विच आर प्रिंटेड इन द बुक, दे आर बेसिकली व्हाट, दे आर बेसिकली स्टैग्नेंट, नो, मतलब एक जगह ही रहता है। सो दैट इज व्हाट शी इज कॉल्ड फनी। ओके, शी इज थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स आर वेरी फनी। And then, when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. Okay? That means again, बार बार जब भी वो बुक खोलेंगे, उन्हें वहीं, ठीक है, same words, everything would be same. So out here in this particular first portion, it is basically talking about the physical books which we have at this particular moment of time. Okay, I think it is clear till now. Moving ahead. Gee, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. That means, देखो, out here टॉमी स्पीक्स अबाउट द रियलिटी। टॉमी रियलिटी का बात कर रहा है, जो हमारे बुक्स के साथ होता है। क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं, 9 से 10 जाएंगे, 9th का बुक फेंक देंगे। बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपना बुक किसी को दे देते हैं। अदरवाइज all the books which we read in the previous session, it goes in waste only, isn't it? So that is something which obviously happens again and again. And that is why Tommy is saying that he is on the safer side. Why he is on the safer side? He is basically on the safer side because he thinks that he can store millions and millions of books in his computer. Okay, and there is no need to throw that book away. And this is also good. Okay, now, same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as much telebooks as Tommy had. He was 13. So obvious है, मार्गी का एज का क्या बात हो रहा है यहाँ पे, that Margie out here was how many years old? She was 11 years old and Tommy was 13 years old. So obviously क्लास 5 का बच्चा जितना पढ़ेगा उससे ज्यादा ही पढ़ेगा ना क्लास 7 का बच्चा. So that is the thing. Okay, so out here Margie is saying that Tommy has seen much more books than she had. और आउट हियर बुक्स के बात नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे बुक का, टेली बुक्स का बात हो रहा है. दैट मीन्स द स्मार्ट बुक्स. शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? In my house. He pointed without looking.
because he was busy reading in the attic. What's it about? School. So, what is an attic? जो छत के वहां जो घर होता है ना, जो हम लोग बोलते हैं ना, छत का जो छज्जा का जो रूम होता है, द रूम, ओके, द स्पेस बिलो द रूफ यूज्ड फॉर एज अ स्टोर रूम। छत के नीचे जो स्टोर रूम होता है या सीढ़ी घर जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एन एटिक, ओके। अब मार्गी उससे पूछती है कि अच्छा ये बताओ ये बुक किसके बारे में है? सो व्हाट डज टॉमी से? दैट द बुक इज अबाउट स्कूल। मार्गी वाज स्क्रॉनफुल, ओके। दैट मींस एक स्क्रॉनफुल का मतलब है एक कोई ऐसा बात जिसको सुन के वेस्ट लगता है, भाई क्या फालतू बात कर रहा है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्क्रॉनफुल एक्सप्रेशन, ठीक है। मार्गी वाज स्क्रॉनफुल। स्कूल, what there to write about school? I hate school. Okay. So मार्गी सिंह, ऐसा क्या है स्कूल में जो लिखने लायक है? ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरे को तो बहुत ही ज्यादा बेकार लगता है स्कूल। Margie always hated school, but now she hated it even more than ever. The mechanical teacher had been given her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. देखो यहाँ समझने का जरूरत है। अब ये देखो, हम लोग उस समय का बात कर रहे हैं 2157। एक ऐसा समय का बात कर रहे हैं जहां जो स्कूल है वो इन लोगों के घर पे ही होता था। हर एक बच्चों के घर पे ही स्कूल होता था, कोई भी बच्चा अलग से स्कूल नहीं जाता था। और घर पे कौन होता था? घर पे होता था मैकेनिकल टीचर। घर पे कौन होता था? घर पे होता था मैकेनिकल टीचर। मैकेनिकल टीचर, अब हम यहां लिखेंगे, ठीक है, एवरीवन पे अटेंशन। मैकेनिकल टीचर का मतलब क्या होता था? सिंपली एक कंप्यूटर, जिसमें अभी जैसे हम पढ़ा रहे वैसे नहीं, लेसन्स जो थे वो पेन ड्राइव या किसी के भी थ्रू फीड रहते थे। एक नॉर्मल रोबोटिक आवाज उसको पढ़ाता था, ठीक है, और उसके बाद टेस्ट लेता था। तो फिलहाल मार्गी लोग के लिए डेफिनेशन ऑफ स्कूल वाज दिस ओनली, मैकेनिकल टीचर की घर के कोने पे एक कंप्यूटर है, वहां बैठ के पढ़ो, दैट इज व्हाट इज स्कूल फॉर मार्गी एंड टॉमी, ठीक है। तो मार्गी को ऐसे ही स्कूल नहीं पसंद था, और अभी तो उसको और भी ज्यादा स्कूल इसलिए नहीं पसंद आ रहा था क्योंकि उसके घर पे जो मैकेनिकल टीचर था वो ज्योग्राफी में उसको टेस्ट आफ्टर टेस्ट दिए हुए जा रहा था, ठीक है, टेस्ट ही हो रहा था उसका ज्योग्राफी में से, और वो हद से ज्यादा खराब परफॉर्म कर रही थी उस सारे टेस्ट में। और इन सब से तंग होके मार्गी के मदर ने क्या किया, एक काउंटी इंस्पेक्टर है। काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? देखो, अब ऑब्वियस है मैकेनिकल टीचर है, ठीक है, हम हमारे जैसा इंसान तो है नहीं कि वो खराब नहीं हो सकता, मतलब हम लोग खराब होते तो क्या होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो सिमिलरली मैकेनिकल टीचर जो है, जो कि एक कंप्यूटर है, वो जब खराब होता है तो उस जमाने में क्या होगा, शायद काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया जाएगा। काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? मान लो जैसे एसी के लिए सर्विसिंग करने आदमी आता है, लैपटॉप का सर्विसिंग के लिए आदमी आता है, उसी तरह हो सकता है मैकेनिकल टीचर जब खराब हो जाता था तो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। दैट इज वाई मार्गी स्टार्टेड हेटिंग द स्कूल, ठीक है। अब देखो, अब ये जो पहला कुछ लाइन है ना, आउट हियर वी विल बी डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टर और द अपीयरेंस ऑफ द काउंटी इंस्पेक्टर, ओके। Out here we will be describing about the county inspector's, appearance. So let's see. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires, ठीक है, obviously एक इंजीनियर की तरह वो आता था। He smiled at Margie and gave her an apple, ठीक है भाई, वो बहुत ही अच्छे से आया, ग्रीट किया और मार्गी को एक एप्पल दिया। Then took the teacher apart, और उसके बाद टीचर को लेके गया बनाने के लिए, obviously service center. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. अब देखो,
मार्गी जब उसके घर में वो खराब हुआ, मार्गी बहुत खुश हो गई कि चलो अच्छा हुआ, भला टला, काउंटी इंस्पेक्टर आएगा, उस डब्बा वो मैकेनिकल टीचर को उठा के अपने साथ वर्कशॉप ले जाएगा और कुछ दिन वहीं पे रखेगा। मार्गी यही होप कर रही थी, लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर जो था उसने क्या किया, मैकेनिकल टीचर को घर पे ही ठीक कर दिया, और 1 घंटे के अंदर उसके मैकेनिकल टीचर क्या हुई, ठीक हो गई। ओके, और उस मैकेनिकल टीचर का अपीयरेंस कैसे बताया गया है, there it was again, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. Okay, so ये है मैकेनिकल टीचर का अपीयरेंस। ठीक है, यहां तक हमको नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए किसी को। That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. And the mechanical teacher calculated the marks in no time. Now, अब क्या होता है देखो, जैसे हमारे कंप्यूटर्स में या जैसे हमारे लैपटॉप्स में एक जगह होता है ना पेन ड्राइव लगाने का, उसी तरह उस मैकेनिकल टीचर में भी एक स्लॉट था। ठीक है, जहां पे मार्गी को जो भी होमवर्क मिलता था वो उसको लगाती थी। उसके बाद टेस्ट पेपर्स भी जो था ना, टेस्ट पेपर्स भी वो वहां पे ही इंसर्ट करती थी। टेस्ट जो ये लोग देती थी, दैट वाज रिटन इन अ कोड। वो ऐसा कोड था, मान लो वो कंप्यूटर लैंग्वेज का एबीसीडी है। ठीक है, जैसे हम लोग कुछ बचपन में एबीसीडी सिखाया जा रहा है, बिकॉज ऑफ विच वी आर एबल टू रीड दिस एंटायर चैप्टर। So just like that, Margie was made to learn all those type of things, because of which she was able to give the test. Okay, and she used to enter her homework and her test in that slot, and mechanical teacher would calculate the marks in no particular time. Now, the inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick." मतलब उसने बोला कि मार्गी जो ज्योग्राफी में खराब कर रही थी उसमें उसका कोई भी गलती नहीं है। एक्चुअल में हुआ क्या था, दैट द ज्योग्राफी सेक्टर और द ज्योग्राफी सेक्टर was geared up a little too quick। मतलब जितना मार्गी का लेवल था उससे ज्यादा आगे बढ़ रहा था, इसीलिए वो स्कोर नहीं कर पा रही थी। Those things happen sometime. I have slowed it up to an average 10-year level। मतलब उसने 10 साल की उम्र की टफनेस के साथ उस मैकेनिकल टीचर का ज्योग्राफी लेसन जो है वो वापस से सेट कर दिया था। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory। And he patted Margie's head again। और काउंटी इंस्पेक्टर ने ये भी बताया कि मार्गी का जो प्रोग्रेस है वो काफी अच्छा है। ठीक है, एंड वापस से व्हाट ही डिड, ही पैटेड मार्गीज हेड एंड ही वेंट। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। ऑब्वियस है, जो बच्चा सोच ले कि अब मान लो सिंपल, ठीक है, आप लोग सब स्कूल गए हो, आपके किसी भी सब्जेक्ट के टीचर्स ने बोला है कि कल मैं नहीं आऊंगा स्कूल, और सपोज उस टीचर का कल 2 पीरियड है, आप एकदम मस्त कि अरे वाह चलो फ्री पीरियड मिल गया 2। then you went then you people went to school and suddenly you see that that particular teacher has come। so what do you feel? You feel depressed, okay, you feel unhappy that क्या सर आप तो बोले थे नहीं आएंगे, क्या मैम आप तो बोलते नहीं आएंगे, but you came। so that was the feeling of Margie also, because she thought that the mechanical teacher would go, but actually it didn't। so Margie was disappointed। she had been hoping they would take the teacher away altogether। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely। अब सोचो, Margie again started comparing her situation to that of Tommy। उसको ऐसा क्यों लगा? उसको ज्यादा दुख इस बात का नहीं था कि ऑल ऑफ यू रिमेम्बर थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स तो सबने देखा, उसमें बोला था ना कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, दोस्त अगर फर्स्ट आ जाए तो और भी ज्यादा दुख होता है। तो मार्गी यहाँ अपने सिचुएशन को टॉमी के सिचुएशन के साथ कंपेयर कर रही है। उसका खराब हुआ, उसका दुख नहीं है,
दुख मार्गी को इस बात का है कि जब टॉमी का मैकेनिकल टीचर खराब हुआ था, then Tommy's mechanical teacher was taken away from him for about a month because the entire history section was blanked out. But out here, the tables turned basically when Margie's turn came into action. What happened? In just a mere 1 hour, her mechanical teacher was fixed. So she said to Tommy, why would anyone write about school? And देखो, that is the reason, that is basically the reason, if I may say so, that Margie hated school. Margie hated her mechanical teacher. And that is why, Margie asked Tommy कि कोई स्कूल के बारे में क्यों ही लिखेगा. Tommy looked at her with very superior eyes. Because it's not our kind of school, stupid. अब टॉमी एक्चुअल जो पॉइंट है, जो आप लोग स्कूल कर रहे हो, जो हम लोगों ने स्कूल किया है, उसके बारे में बताया जा रहा है. ठीक है. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. मतलब टॉमी बता रहा है कि now we are talking about a school, okay, which used to exist hundred years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. Obviously, 100 years before. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, Anyway, they had a teacher? अब मार्गी शॉक हो गई कि उन लोग के पास टीचर भी था क्या. Sure, they had a teacher, but it wasn't regular teacher. Now, out here, regular means what? Out here, regular means for them is the mechanical teacher. ठीक है, क्योंकि वही उन लोग के लिए नॉर्मल था, रेगुलर था. It was a man. A man? How could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. A man isn't smart enough. मतलब मार्गी के दिमाग में है कि सारे जो लोग हैं, जिसे टॉमी बोल रहा है कि वो टीचर, वो सारे तो बेवकूफ है. मतलब इन अ वे, जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं तो मार्गी हम लोग को बेवकूफ बोल रही है कि इन्हें क्या ही पता है, ये क्या ही पढ़ाएंगे. क्या वो इतने स्मार्ट होते थे? A man isn't smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher. So simply, yes. Tommy says कि नहीं, मेरे पिताजी तो जानते हैं. My father knows much as my teacher knows. He knows almost as much, I betcha. Okay. So betcha, it simply means bet you. Okay. For sure, he doesn't know that. Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. Now, what Margie thought here? Margie thought कि जो टीचर्स होते थे ना, जो इंसान जैसे हम लोग हैं, उसे लगता था जिस तरह से उसके मैकेनिकल टीचर घर पे ही रहते हैं, वैसे ही टीचर घर पे ही आता है पढ़ाने. जैसे हम लोग होम ट्यूशंस देते हैं या होम ट्यूशंस तुम लोग लेते होगे, उस हिसाब से. ठीक है. So that is the thing. So she says that I wouldn't want a strange man in my house to teach me. Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building, and all the kids went there. And all the kids learned the same things? Sure, if they were the same age. जैसे हम लोग क्या करते हैं, क्लास के हिसाब से सेग्रीगेट करते हैं ना बच्चों को. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So everyone is taught different things, but the group of people, those who are there in the same class, they are taught the same thing. So that is the bifurcation that basically Tommy is talking about. Okay. And out here we can surely say that Marky is damn surprised about it. Okay. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. Just the same, they didn't do it that way then.
If you do like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. So Margie is basically giving her justification कि मम्मी तो बोलती है, जैसे देखो अब मैकेनिकल टीचर है उन लोग के पास, तो ऑब्वियस है ना उसका तरीका अलग है सेट करने का, उसको ट्यून करना पड़ेगा, उस हिसाब से पढ़ेंगे। तो मार्गी बोल रही है कि मम्मी तो बोलती है कि हर टीचर को अलग अलग वे में पढ़ाना पड़ता है, हर बच्चों को अलग हिसाब से सेट करना पड़ता है। सो टॉमी बिकेम अ बिट इरिटेटेड नाउ एंड शी सेड दैट इफ यू डोंट वांट टू रीड द बुक, जस्ट डोंट। ओके, सो मार्गी सेड क्विकली, नो 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 नो, आई वांट, आई डिडंट लाइक इट, आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मतलब थोड़ा बहुत तो पसंद आ रहा है। शी wanted to read about those funny schools. अब देखते हैं क्या हुआ। They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie, school. So again for her, again school means that mechanical teacher जिसके सामने वो फिर जाके बैठ जाएगी और उसका पढ़ाई शुरू हो जाएगा। Margie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mrs. Jones. And it's probably time for Tommy too. So, Margie's mother was very specific. देखो हम लोग की तरह का तो स्कूल है नहीं कि in the morning you have to report in time, otherwise you won't be allowed to enter and all those stuffs. So they are like, no, not yet. Then again, Mrs. Jones, or basically Margie's mother, said her that no, it's time, and Tommy, it's Tommy's time too, so you should go. Margie said to Tommy, "Can I read the book some more with you after the school?" That means Margie asked Tommy basically that can she accompany Tommy in reading the book, you know, after the school gets over? Maybe, he said nonchalantly. Okay, what is the meaning of nonchalantly? Nonchalantly simply means that Tommy is not showing much interest. Much interest. Oh, look, the meaning is already given over here. Okay, not showing much interest or enthusiasm, careless. Okay, he walked away whistling and dust of old book tucked beneath his arms. Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. देखो जिस तरह से we people, you people get holidays in weekends. Similarly, the mechanical teacher was also not switched on at the regular period of time during the weekends. Okay, but during the weekdays, that is from Monday to Friday, the mechanical teacher was on at a specific time. जैसे आप लोग के स्कूल का एक specific time होता है, उसी तरह mechanical teacher का भी एक specific time होता था. Because her mother said, little girls learn better if they learn at regular hours. मतलब उसकी मतलब मार्गी की मदर हमेशा ये बोलती थी कि अगर बच्चे एक फिक्स टाइम पर पढ़ें तो ये उनके लिए बहुत अच्छा बात है. The screen was lit up and it said, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. So, at this particular moment of time, Margie was reading which subject? She was reading maths. Okay, and she was dealing with which topic? She was dealing with the topic of addition, and that too from which chapter? From the chapter fraction. Okay, and from, if I further subdivide it, it is the addition of proper fraction. I hope I'm clear so far. Please insert yesterday's homework in the proper slot. Okay, so again it asked first for the homework. Margie did so with a sigh. That means एक सांस लेते हुए उसने अपना होमवर्क को स्लॉट में डाला. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. मतलब हम लोग के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, कि हम लोग किस तरह का स्कूल अभी जानते हैं या किस तरह का स्कूल में हम लोग पढ़े हैं या पढ़ाते हैं. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting, in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together,
at the end of the day. That means जिस तरह से तुम लोग स्कूल में आते हो, एक साथ ग्रुप बना के बैठते हो, you people make noise, you people shout, you people have fun, you people study together, all those things Margie was thinking about, and she was just thinking how much fun it is. Okay, that means just imagine the past 2 years which you people spent during the pandemic. It was pathetic, right? Everyone was sitting at their own home, they were studying, you people were far away from your friends. No, that wo masti mazak hota nahi tha. So that is a very bad thing, you can say, that was always happening. Okay, so that is the basic thing. Okay, so Magi was thinking about the school which we are having now. Okay, they learned the same thing, so they could help one another with homework and talk about it. Obviously, we take each other's help in homework and all. हम तो इतने गिर चुके हैं कि हम एग्जाम में भी एक दूसरे का हेल्प लेते हैं. So that is the thing basically which Margie is thinking about. And the teachers were people. जैसे हमारे तरह इंसान थे वो teachers. The mechanical teacher was flashing on the screen. When we add fraction 1 by 2 and 1 by 4, and the sum continues, and that is why this particular expression of dots has been written. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had, or we can say about the fun we have, or the fun you have. Okay, and this particular piece of work has been done by Isaac Asimov. Okay, so a very beautiful chapter written by him, and I hope whatever we did today in the class was, you people were able to understand it. And thank you so much for staying around and sticking around with the class for so long. So, like the video and subscribe the channel. Thank you.